जो भी आप गोल आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, आप उसे बहुत जल्दी सेट कर लें एंड आप ये इंश्योर करें कि आप उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है आपके हाथ में जो है वो आप करें एंड यू एंड अप अचीविंग द बेस्ट बिकॉज दैट इज़ द ओनली शॉट यू हैव। एंड जो मैंने अपने फादर से भी सीखी थी वो है कि जो आज जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा कल आने वाले फ्यूचर में लाइफ उतनी आसान होगी, और जो आज कम मेहनत करेगा लाइफ इज़ अ स्ट्रगल आफ्टरवर्ड्स। Law is considered a popular career in India, and if you want to become a good lawyer, the first step is getting into an NLU, that's the National Law University. So the first step in getting through to that is giving the CLAT examination, which is the Common Law Admission Test. Hi everyone, I'm Fiona. Welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. And today, for your preparation, we have with us a topper who has scored an All India Rank 1 in CLAT 2018. Everyone, let's welcome Aman Garg. Hi Aman, welcome to the show. Thank you so much. So Aman, before we start the show, I would like to congratulate you for the Aditya Birla scholarship. Tell us more about it, what it is. So the top 20 people of the top 5 NLUs based on their ranks are given the chance to submit 2 essays, one on the what quality they possess and another is why did they choose law, and substantiated with their CV. So that is evaluated by these people. And then around 45 people were shortlisted from the law category. Then we had interviews back on 22 when we were called to Mumbai and ITC Grand Hotel. So then there was a panel of former Chief Justice of High Courts and partners at law firms. So they interviewed us about various aspects of what defines us, basically our CV and what we have done till now. So basically they'll give a scholarship to 15 people. So basically जो 5 साल की हमारी पूरी ट्यूशन फीस होगी नेशनल लॉ स्कूल में वो अब पूरी आदित्य बिरला ग्रुप बेयर करेगा. Wow, so I'm sure that must be very helpful. Like बहुत लोगों के लिए अगर the entire tuition fees is covered, it's like really helpful, right? So great man, congratulations. Thank you so much. So Aditya Birla scholarship अब तो हो गया. Now let's get on to the main exam. जिसमें you've managed an All India Rank 1. Tell me more. What exactly is the CLAT exam? So CLAT exam, as you said, is Common Law Admission Test. So 19 NLUs जो होते हैं National Law Universities, they come together and every year one NLU conducts the CLAT examination. And on the basis of ranks and according to the preference list that you submit about the NLUs, then you are allotted colleges. So my preference list was Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, and Jodhpur and so on. Okay. And other than that, there is another exam called CLAT, which is conducted by National Law University of Delhi as well. Perfect. So Bangalore NLU was always your aim. Yeah. So basically, looking at the ranks and all that come out surveys, so it was an unprecedented rank 1. So that is why I had always aimed to get into this. Perfect. So when you talk about the CLAT exam, I know you're really young as well. What is the eligibility for this? So for the eligibility, the Supreme Court last year removed the age cap that is there. So now any person can give CLAT. Basically from any stream, there is no bar. So any person can give it. So it is held once in a year, and it is held in the month of May on the second Sunday. So अब कोई limitation नहीं है, कोई भी दे सकता है. कोई भी दे सकता है. Perfect. So eligibility के बारे में तो समझ में आया. अब आप थोड़ा बताइए, like what's the exam structure for CLAT? So ये एक MCQ based question exam होता है. इसमें objective type questions आते हैं with 4 options and there is negative marking as well. Okay. So broadly the exam is of 200 marks and there are 5 subjects that are there. Logical reasoning, maths, English, general knowledge and legal reasoning. Okay. So that is what that basically is there in the structure of CLAT. Perfect. So I see you, obviously now you are rank 1, you should be knowing it well. So I see you have a good idea about the structure and everything. So one thing that comes to my mind when I hear you is why CLAT? Why did you, decide to go ahead with it? So, well, that comes again to why did I choose law? Because CLAT is just the way that I get into the National Law University so as to pursue my career in law. So back in the days, so I had always been good in academics and all.
So my father once told me that you're good in debating and I see leadership qualities in you. So I think law is one thing that you should really think about, and the subjects that it covered, the laws, its involvement with the judiciary and all these institutions, that really intrigued me. So I basically researched, and it was quite manageable as well with 11th and 12th. So that is why I chose CLAT. So अगर मैं ऐसे बोल सकूँ तो basically it was your dad जिन्होंने आपको motivate किया and who thought कि you would be a good fit as a lawyer. जी बिल्कुल, मतलब हमेशा से वही इंस्पिरेशन रहे थे. अपने टाइम में भी वो राजस्थान टॉपर थे RBSC के, and he topped RAS and all that as well. Wow. So I always looked up to him so as to like derive motivation and inspiration, and he was the one who just nudged me कि ये CLAT is one thing that you should really look upon, and I did, and I really find it interesting. ग्रेट. तो जैसे आपने बोला कि आपके डैड उन्होंने RAS भी क्लियर किया था, यू नेवर थॉट कि शायद मैं RAS कर लूँ? सो बेसिकली हमेशा घर में यही था कि पापा RAS है तो मुझे अब IAS बनना चाहिए. सो दैट इज़, तो वो अभी भी है, लेकिन उसके लिए आपको एक अंडर ग्रेजुएट करना ज़रूरी होता है. सो पापा ने कहा कि अंडर ग्रेजुएट यू शुड डू इन लॉ, एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक इफ़ यू वांट टू डू इट देन आई विल बी वेरी हैप्पी, अदरवाइज ही हैज़ लाइक allowed me to do whatever I want as well. So what is your wish? Like would you want to go into civil services, IAS? So basically I really like how the public dealings work. So one thing that I would like to do is to just serve the public in any way, and one broad dream that I have, I'll like to call that a dream, is that to become a legislator, maybe a politician one day. So that is one thing that I really thinking about. But एक चीज़ जो होती है कि हम जब दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ एक वो कोर्ट और वहीं तक लिमिटेड है, लेकिन लॉ एक बहुत डिवर्स फील्ड है. तो जैसे ही अब मैं लॉ स्कूल में आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें भी होती हैं. सो दैट इज़ वाई मैंने एक फ्री एंड भी छोड़ा कि कुछ और अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगे तो मैं उसको भी एक्सप्लोर कर पाऊँ. तो जैसे अभी आप बता रहे हो कि अब आप जब लॉ स्कूल में आए, यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल, टेल अस अ बिट मोर अबाउट आपकी जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक कैसे हुई है, यहाँ तक जो आप पहुँचे हो, एंड देन टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट आपके लॉ कॉलेज में कैसे चल रहा है. सो जैसे मैंने आपको बताया 10th में मेरी अच्छी स्कोर आई थी, एंड मेरे फादर ने कहा कि यू शुड परस्यू लॉ. सो मैंने ये सोचा कि why not start early, because there's always an early bird advantage that you can derive if you start early. Sure. So that is why I started preparing, not really, but at least that I decided that I want to do CLAT, and I started doing the basic things that I could. तो 10th क्लास से ही आपने शुरू कर दिया था? 10th के रिजल्ट के बाद 11th क्लास से. So I took commerce with maths. So मुझे 2 ट्यूशंस अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स की स्कूल के लिए भी अटेंड करनी थी. So that is why I thought कि 11th में अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ तो, क्योंकि 12th में मेरे बोर्ड्स भी होंगे, एंड आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माय परसेंटेज. सो आई थॉट कि 11th में मैं जितना भी पढ़ पाऊँ, सो except current affairs, whatever it was, my concepts with legal reasoning or static GK or basic grammar of English and all that, I tried to cover that in 11th as well. Now काफ़ी बार ये होता है, लोग सोचते हैं कि कोई भी आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड आपको उसके साथ अपना साइमल्टेनियसली स्कूल के बोर्ड्स भी देने हैं, तो आप दोनों में अच्छा नहीं कर सकते. लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि आई स्कोर 93% इन बोर्ड्स एज वेल. सो इट इज़ नॉट कि आप एक ही चीज़ दोनों में से, मतलब ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर खाई और कुआ, वैसा नहीं है. यू कैन एक्सेल इन बोथ एज वेल. So it's more of, I think, preparation and planning, and strategy. Exactly. And strategy. Perfect. So one thing I would want to know, आपने जैसे बताया 10 and 12 में भी अब अच्छे थे. So have you always been like a topper student, or you've sometimes even been average? Yeah, so basically when you're a son of a person who has topped, in his times as well, so something of a similar sort. थोड़ा सा प्रेशर रहता है घर पे? प्रेशर तो बिल्कुल था, मतलब प्रेशर नहीं, आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे. सो इट वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी टू फॉलो हिज स्टेप्स एंड ऑल दैट. So yeah, primary classes say I was among the toppers as well. But main thing that I was that till 10th I was only in academics and all. And after that I realized that apart from academics I want to derive something out of my school life as well. So that is the time when I started indulging in quizzes and debatings, and I play a lot of sports and all that. So कौन सी स्पोर्ट खेलते हो आप? So basically बास्केटबॉल के अलावा जो भी स्पोर्ट्स मतलब आसानी से अवेलेबल हो, मैं वो आराम से खेलता हूँ. बास्केटबॉल के अलावा मींस आपको अच्छी लगती है बास्केटबॉल? नहीं, बास्केटबॉल नहीं लगती. बास्केटबॉल के अलावा कोई भी. And I have a special interest in horse riding. So back in Rajasthan I was selected in police and army camps as well. Okay. So these are some hobbies that I like to pursue apart from my academics. Great. तो अच्छा बैलेंस रखते हो आप दोनों में. तो coming back to the exam
itself. You told us a bit about क्या structure रहता है exam का. So tell us a bit about आपकी क्या strategy थी for this structure that was there for the exam? So basically मैं जयपुर में था, so तब उस टाइम पर इतनी ज़्यादा कोचिंग्स जो नेशनल लेवल पे थी वो नहीं थी. So I got enrolled into a coaching that was based in Jaipur only for the weekends thing, so that I could concentrate in my weekdays on my boards and my school studies, and in the weekends I could just give some few hours to CLAT, because CLAT, if you see, is more of an aptitude test than to which demands like a lot of learning. It just requires कि आप में basic intelligence हो, general awareness हो and all that. So that is why, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि apart from current affairs, because वो एक साल की आती है, so that I would have to do in 2017. Apart from that, I tried to cover almost everything that I could, at least, so that in 12th में अपनी जो भी मेरी प्रिपरेशन है वो ज़्यादा मैं प्रैक्टिस बेस्ड रख पाऊँ. So that was basically my strategy for overall. Okay. So जैसे कि आपने हमें बहुत सारे sections बताए थे एग्जाम के. Right. Can you just break down each section के बारे में कुछ बता सकते हो आप कैसे किया था? So starting with English. So English is very similar to any other competitive exam if you see any objective paper. Just like CAT की तरह? CAT or maybe IBPS or anything. So basically it includes reading comprehension, grammatical errors, paraphrasing and jumbled words and all that. So English के लिए ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी. All you needed to do is to have a very basic knowledge of English. Another thing you could do is to purchase some book and try to do it as a sort of a workbook and stuff. And other than that, I struggled with vocabulary a lot. So ये एक्चुअली बहुत लोगों में लाइक स्पेशली सिंस हमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमें हमारे लर्नर्स आल्सो वो कैब में बहुत ही वीक हो जाते हैं. तो मेरी स्ट्रैटेजी इसके लिए थी कि सबसे पहले मैंने नॉर्मन लुइस की बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी. आई डिड दैट, सो दैट इक्विप्ड मी विथ मोर देन 800 वर्ड्स एज वेल. तो व्हाटएवर न्यू बुक्स आई कुड फाइंड, आई यूज्ड टू लुक अप वर्ड्स. उसके अलावा मैं जितने भी न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, सो आई यूज्ड टू रीड 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. दैट वाज द हिंदू और एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये आप कोई भी इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं. सो इसमें लाइक जनरली बहुत सारे लर्नर्स जो होते हैं, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, दे हैव दिस इशू दैट हिंदू पढ़ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. सो डिड यू थिंक यू हैड अ डिफिकल्टी जब आप कर रहे थे? तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो उसकी जो लेवल है एंड द एडिटोरियल्स एंड ऑल दैट, एडिटोरियल्स ऑब्वियसली हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं थे बिकॉज ऑब्जेक्टिव टेस्ट था. वी जस्ट नीडेड द फैक्ट्स दैट वर देयर. सो क्या उससे न्यूज़पेपर पढ़ने से अगर आप डिफिकल्ट पढ़ते हैं तो उससे बेसिकली 3 फायदे होते हैं आपको. आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है, जो कि क्लैट में भी पूछी जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी. Other than that, आपकी vocabulary, you find new words, so you can look up to them and equip yourself with them. और एक और चीज़ जो है, जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इफ़ यू रीड क्वालिटी आर्टिकल्स, अगर आप अच्छे एडिटोरियल्स या कुछ क्वालिटी एनालिसिस पढ़ें किसी चीज़ का, सो आपकी उसकी रीडिंग फास्ट भी होती है, आप अच्छा कॉम्प्रिहेंड भी कर पाते हैं. तो ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ें. एंड द हिंदू इज़ आई कंसिडर इट एज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स. सो इंग्लिश के लिए मैं ये करता था. एंड कमिंग बैक टू वोकैबुलरी, मैं वेबसाइट्स देखता था, नई बुक्स देखता था एंड ऑल दैट. सो मैथ्स 10th लेवल तक की आती थी. तो ये ज़रूरी नहीं होता आपके लिए कि आप 11th या 12th में आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी हो. मेरे पास थी, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि मेरा थोड़ा हाथ तेज चलता था मैथ्स में. दैट्स द ओनली थिंग यू कुड डिराइव. तो मैथ्स के लिए 10th लेवल तक की आती थी. सो मैंने तो सिर्फ पुराने पेपर्स किए थे, क्योंकि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड बीन वेरी गुड इन मैथ्स. तो मुझे इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी. For the people who are doing it, all they can do is to just buy another book and just do questions on a regular basis. Coming to reasoning, क्योंकि रीजनिंग का एक पार्ट काफ़ी मैथ से डिराइव्ड होता है, दैट्स द एनालिटिकल पार्ट. सो वो भी नेचुरली मेरा काफ़ी तेज था एंड ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ दैट क्रिटिकल रीजनिंग दैट इज़ देयर, फॉर एग्जाम्पल सिलॉजिज्म एंड आर्ग्यूमेंट. सो दैट इज़ वन थिंग जिसमें मैं बहुत स्ट्रगल करता था. सो जो कोचिंग मटीरियल था, आई यूज्ड टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस एंड ऑल दैट. सो लीगल रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी ने, ये एक नया सेक्शन होता है जो आज तक जिसे ने भी कोई भी एग्जाम्स दिए होते हैं वो कभी नहीं देखा होता है. So what they ask in legal reasoning is they do not require from you any particular or prior knowledge of law, because we have to understand that this is an entrance exam to undergraduate courses. So यहाँ पर आप सीखोगे. तो for CLAT what they ask you is, there are principal facts questions. So they give you a very broad principle as to one piece of law that okay, this is theft, and then they give you a case or a story in the facts, and then you have to decide on this.
So problem इसमें यहाँ आती है कि this is very judgmental. This requires opinion and all. Exactly. So You and I could differ. Exactly. So this is one thing that is very problematic. You can differ from your teacher as well. So this is one thing that I have seen कि जहाँ बहुत लोग struggle करते हैं और मैं भी struggle करता था. So इसके लिए what I did was to solve the past year papers, because one thing that I saw was the questions and the concepts were getting repeated lately. So I did all the questions. I tried to understand the concepts because there was nothing I could learn and mug up and stuff like that. In the legal part as well, apart from this reasoning, there was GK as well, including facts about the Supreme Court and the contemporary issues or इसकी history. So वो आप किसी भी book से कर सकते हैं. Now coming to the main make or break it, that is general knowledge. Okay. So उसमें दो parts होते हैं, current affairs and static GK. Static GK वही standard history, geography, civics. NCRTs जो होते हैं? NCRT not really. क्योंकि जो स्टैटिक में आता है दैट टू इज समवेयर रिलेटेड टू करंट. सो फॉर एग्जांपल अगर करंट में अभी कोई इशू पे, कोई हिस्टोरिकल इशू पे बहुत डिबेट है, सो देयर आर ग्रेट चांसेस कि उसी से रिलेटेड हिस्ट्री का कोई और क्वेश्चन है. सो दैट इज व्हाई देयर आर डेडिकेटेड बुक्स फॉर दैट, फॉर एग्जांपल लूसेंट एंड एनी कोचिंग मटेरियल दैट यू कैन फाइंड. Now coming to current affairs, what I did was so that you should keep your sources very diverse. I mean, you should not limit your sources to one particular website or magazine. फिर limited हो जाता है आपका knowledge. Exactly. So मैंने ऐसा किया कि मैं करीब 6 to 7 sources रेफर करता था अलग अलग, ताकि मुझे कुछ क्या पता एक क्वेश्चन हो जो इसने कवर नहीं किया वो दूसरी तरफ से आ जाए. क्या थी वो रिसोर्सेज, if you remember some? या श्योर. सो सबसे पहले जो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था उनसे मैं नोट्स लेता था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरी जो कोचिंग जो मेरे को मटेरियल प्रोवाइड करते थे मैं उस पर रिलाई करता था. अब एक और ज़रूरी चीज़ ये होती है, आप दूसरे कोचिंग में जाने वाले बच्चों से भी फ्रेंडशिप करें ताकि उनका मटेरियल एक्सचेंज कर सकें. एक ग्रुप बना ले, सब एक्सचेंज कर दें. या सो दैट वे. तो आप जितना दूसरी कोचिंग के भी आप current affairs or whatever they provide, if you can get your hands on to them as well. उसके अलावा काफ़ी ऑनलाइन साइट्स थी जैसे कि GK टुडे एंड जागरण जोश एंड ऑल दीज. सो मैं इनको भी फॉलो करता था. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉच करंट अफेयर्स वीडियोस ऑन यूट्यूब एज वेल. तो जितना भी आप बेसिकली जो आइडिया था कि जितना अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ. ग्रेट. सो ये मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी थी. परफेक्ट. तो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ से मुझे समझ में आई इज़ बहुत सारे लर्नर्स हमारे जो कहते हैं हिंदू इज़ डिफ़िकल्ट. आई थिंक अगर डिफ़िकल्ट भी है दे शुड स्टिल ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट, स्पेशली मे बी जो बच्चे SSC या IBPS या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. इवन इफ द न्यूज़पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, ट्राई टू रीड इट. उससे बेसिकली आपका ही भला होगा, वो कैप विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड कॉम्प्रिहेंशंस में भी हेल्प होगी. राइट. एग्जैक्टली. सो जो मैंने 3 बेनिफिट्स बताए वो तो होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अच्छे, तो आपकी ग्रामर भी बढ़ती है, आपको यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. सो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प होती है अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ें और डिफरेंट बड़े बड़े ऑथर्स की चीज़ें पढ़ें. सो दैट इज़ वन थिंग जो कि काफ़ी हेल्प करती है. परफेक्ट. GK का भी आपने बहुत सारे अच्छे टिप्स आइडियाज़ बताए जैसे लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड GK इज़ अगेन समथिंग जो बहुत सारी एग्जाम्स में यूज़ होती है. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स. सो काफ़ी कुछ CLAT के बारे में यहाँ तो हमें पता चल गया. नाउ टेल अस समथिंग. आप जब आप बोल रहे थे, आप थोड़ी से आपके डैड के बारे में मुझे पता चला, मॉम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला. टेल मी समथिंग अबाउट योर मॉम. सो माय मदर इज़ अ हाउस मेकर. सो उन्हीं का कॉन्स्टेंट सपोर्ट है. आई मीन आफ्टर द रिजल्ट्स केम, so I said that in getting rank 1 I have only 5% role. Apart from that my family, my friend, my mentors. So काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझे खुद में इतना बिलीफ नहीं होता जितना बाकी लोगों का होता था. So my mom was a great support for me all the way through. So mom was a great support. I actually because obviously इससे पहले भी मैंने आपसे बातें की है, I did know something that happened in your past also. Right. आपकी mum से related. Yeah. Would you like to share it with the viewers? Yeah, so as I told you, my father is an RAS officer, so उनकी transferable post है. So for the past 10 years we had been living in Jaipur. तो हम काफ़ी settle हो गए थे, मेरी एक एजुकेशन भी चल रही थी. सो इन 9th क्लास मेरे फादर का काफ़ी दूर श्री गंगानगर ही वॉज पोस्टेड. सो माई मदर टुक अ ग्रेट स्टैंड दैट मेरी एजुकेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह का नहीं होगा. एंड फॉर 4 years, लाइक फ्रॉम माई 9th स्टैंडर्ड टिल द मोमेंट आई क्रैक CLAT, तब तक वो अकेली रही 4 साल मेरे साथ. शी यूज टू डू ऑल द सैक्रिफाइसेस. वो जल्दी उठती थी एंड
all day, you know, she was concerned कि मेरी पढ़ाई में कुछ वो ना हो. And you know, so another that was interesting was that throughout my 12th, so as a stress buster, what we did was to play a lot of Ludos. मैं तो इतना कहता हूँ कि अब more than mocks I have played the Ludo matches as well. Even on the day of CLAT I was playing Ludo and all that. So these were the things that my mother came up with, so that I was concerned and I was focused on my end goal. So आज अगर आपको अपनी मॉम को एक मैसेज देना हो तो what would you tell her? Tell her. Yeah, I mean, it is, you cannot describe what she has done or repay it in a few words. I'm always thankful and grateful to her for her constant support. And she's one person who does not want any recognition. I mean, she's happy if I do good. And I think that the results were, in a way, I made her happy, and you know, and all the scholarships and the great things that I have been following. So by those means she was happy. So that is one thing that I can do that for her. Like that's a minimum I can do that for her. That's great. I'm sure she must be a very proud mother as well. So, you know, we spoke about your family. I came to know about your mom and dad. Any other siblings you have? Yeah, I have an elder sister. क्या करती So हो? वो उन्होंने अभी NIFT Delhi fashion technology जो institute है Wow. दिल्ली से, so वहाँ से she graduated, and she and her third year she did from FIT New York, which is the best fashion institute in the entire world. So काफ़ी बार ऐसा होता था कि पेरेंट्स कहते हैं किसी की look at her, वो कितना अच्छा कर रही है, and she recently topped her college as well in the convocation. Wow. She was What's her awarded. name? Her name is Malika. Malika. Yeah. Congrats, Malika. You're doing great. काफी बारे comparisons होते थे कि देख ये देख अब क्या मतलब ये देख तेरी बहन ने क्या कर दिया, तू कब कुछ करेगा. So we had the same school as well. So काफी teachers मुझे मलिका का भाई और ये सब बोलते थे. So no, yeah, that was kind of, at sometimes it was awkward. So but after अब उनको बोलते हैं अमन की बहन. Exactly, that was what. So after the results came out, so अब school में like people sometimes refer to as Aman की बहन. So I mean, there is no competition, but you know, it sometimes feel nice, these little things that happen. Great. And yeah, she too supported me in a great way, and yeah, my family, and not even my immediate family, but my uncles, and you know, I have big family, so everyone adjusted. So you know, when the days of April and May came, when there were only बहुत कम time बचा था, so मेरे family members ने काफ़ी cooperate किया, and you know, sometimes when my mom was not there, they used to come and look after me. So काफ़ी लोगों का support रहा है, my friends, and they always had the faith in me that yes, I could do a great thing, and my teachers. So काफ़ी तो 12th में ये हुआ था कि हमारे स्कूल में साइंस वालों को ही ऐसे ग्रीन कार्ड इशू थे कि वो कभी भी जा सकते थे, तो मैं इकलौता था कॉमर्स से जिसको भी दिया था, सो दैट मैं क्लैट के उस पर फोकस कर पाऊँ. सो मेरे स्कूल, मेरी कोचिंग, सबसे बहुत ही ज़्यादा मेरे को सबने ही बहुत हेल्प किया. बहुत हेल्प किया. सो लाइक स्कूल की तो मुझे समझ में आ गई, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव. अब जो आप कॉलेज में हो, कैसे चल रहा है? लाइक व्हाट्स कॉलेज लाइफ? या सो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब हम जैसे जिस जगह से आते हैं और जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, इट्स क्वाइट डिफरेंट. सो पहले 5 बजे उठते थे, अब 5 बजे सोते हैं, और अब हॉस्टल में रहना पड़ता है, प्लस इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है. सो NLS जो मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ अभी, उसमें वन थिंग्स दैट अमंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट सेट्स इट अपार्ट इज उसमें एक ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है. सो एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 सेमेस्टर्स यू हैव 3 ट्राइमेस्टर्स. सो उसमें आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी पड़ता है, बट उसकी एक अच्छी बात है, आपको 3 वेकेशंस भी मिलती है. सो अभी आप जाने वाले हो? अभी मैं बस आज ही जाने वाला हूँ. सो काफ़ी हेक्टिक होता है, बट द थिंग इज आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हो. यू नो, चीफ जस्टिस केम फॉर द कॉन्वोकेशन, एंड a lot of luminaries. मैंने बहुत सारी आपके फोटोज देखे. You've met a lot of people. Can you tell us a bit more? किन से मिल चुके आप? So I have met Rajdeep Sardesai, Manishankar Iyer, Barkha Dutt, and Chief Justice of India, and हमारी एक हाई कोर्ट विजिट भी हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका दिनेश माहेश्वरी, and a lot of luminaries. Colin Gonsalves, he's a big human rights lawyer, and there was Cal Malamud. So a lot of people come and you know they give you insights. So आपका ऐसे ही all over improvement and development होता है कि you meet a lot of people. Plus the thing is काफ़ी culture shock भी एक तरह का होता है, because I come from Rajasthan and I'm very fond of my you know being a Rajasthani. So आप बाहर आते हो तो काफ़ी different, आपको food हो या कुछ भी lifestyle का जरिया, लोगों की नज़रिया. Exactly. So
apart from that, there are a lot of opportunities there. We get to do a lot of moods, debates, competitions. Other than that, डिबेट्स तो हमेशा आपको अच्छी लगती थी. yeah, exactly. And then I play a lot of sports in college as well. For example, I never played hockey. अब मैं hockey भी खेल रहा हूँ college में. So एक वही चीज़ थी एक basketball के अलावा जो मैं नहीं खेलता था, वो भी cover हो गई है. चलिए, very good. So you're having a great time in college. Perfect. And now obviously with the scholarship coming in also, you know, it just makes everything so nice. Yeah, I mean, so this I can accrue to a larger habit that I have is to take one step at a time. तो हमेशा CLAT के लिए भी I had these short goals कि मेरे को आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सब्जेक्ट कब तक करना है. So in college as well, मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मेरा short term goal था to get the scholarship. Now I'll be focusing more on to improve my academic performance in college as well and to do better in the competitions as well. So this is how you improve. आप छोटे छोटे goals लेके चलते हैं तो आप बड़े उसमें अच्छा कर पाते हैं. So that's very important takeaway, guys. So if if you see a topper, basically what they do, they are very ordinary people, but they end up doing extraordinary things with all this planning. Choti goals rakhiye, try to achieve them. Once you achieve them, look at the bigger picture. And with that constant dedication and hard work, you'll definitely reach that. So Aman, इतना कुछ हमने सुना जो अच्छा जा रहा था. Right. So in ऐसे मुझे बताइए कि कुछ ऐसा आज तक हुआ है विच इज़ मे बी लाइक अ पिट स्टॉप जहाँ पे यू नो आप या तो फेलियर यू हैड टू फेस और यू कुछ ना कुछ जो बुरा चला गया था, नॉट एज गुड एज एवरीथिंग एल्स. जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था गंगानगर में, तो वो एक काफ़ी बहुत फेस था, मतलब काफ़ी 1 साल लगा एडजस्ट होने में. सो दैट ही वॉज नॉट देयर. वो काफ़ी कॉन्स्टेंट मोटिवेशन थे. कभी भी मेरे से कुछ नहीं होता था, ही यूज्ड टू टीच मी एंड ऑल दैट. तो उनकी एब्सेंस मतलब 4-5 सालों के लिए वो दूर रहते थे, सिर्फ कभी कभार वीकेंड्स पे ही आ पाते थे वो. सो एक वो काफ़ी बड़ा सेटबैक था. मेरी मदर ने काफ़ी उसको रिकन्सिलिएट करने की कोशिश करी. शी यूज्ड टू come up with all the things so that I was focused. Another thing was back in 2017 there was a thing called Times of India की scholarship भी एक आई थी. So 3 महीने के over Times of India में ऐसे articles आते थे and then there was a test. So the cutoff of it went 71 and I scored 70.5. So for 2-5 days I was completely thrown off because I knew I would do good in the interview, but वो मेरा 0.5 से रह गया था. तो मेरी मदर ने कहा कि this is not as important. सबसे मेन चीज़ है कि CLAT आने वाला है क्योंकि काफ़ी सिमिलर था. तो शी सेड कि देखो 0.5 से कितना फ़र्क पड़ गया है. सो आपको हर चीज़ पे फोकस करना है एंड यू शुड डिराइव अ लार्जर पिक्चर ऑफ इट. और एलेट या कुछ भी एग्ज़ाम हो, सो अब आपको ज़्यादा तैयारी करनी है. सो दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो दैट रियली पुट मी कि अब से आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़. सो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे ड्रॉप नहीं करना. और रीज़न ये था कि अगर मैं 11th से तैयारी कर रहा हूँ तो 2 years स्पेशली फॉर CLAT इज़ अ बिग टाइम. तो आप कभी भी फिर आपके पास ये बोलने को नहीं होता कि आई डिडंट हैव टाइम एज वेल. सो CLAT बीइंग एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो ये मेरे लिए था कि मुझे 2 साल इज़ इनफ फॉर मी, 2 years इज़ इनफ फॉर मी. तो एक और बात जो अब देना चाहते हैं कि आप अगर 11th में हो तो प्रेफरेबली अब से तैयारी करना स्टार्ट करें. इवन इफ़ यू आर इन 12th, इवन इफ़ आपकी 12th आधी ख़त्म हो गई है, लोगों ने 2-2 1-1 महीने तैयारी करके दे हैव क्लियर द CLAT एंड गॉट द टॉप मोस्ट NLU. सो एक बात जो CLAT के लिए बहुत अच्छी है वो है कि ये ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने इतना टाइम प्रिपेयर नहीं किया सो नहीं हो सकता. सो जो लोग कभी भी हैं, मतलब अब फॉर द नेक्स्ट May 2019 CLAT, तो अगर आप 11th में हैं तो प्रेफरेबली आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहेंगे, या आप 12th में हैं, या इवन इफ़ यू आर ड्रॉपर, इट्स एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर CLAT. और जितना आप ज़्यादा मॉक्स दे सकें. सो मेरे लिए क्या हुआ था कि फॉर आई गेव 90 to 100 मॉक्स. तो एज आई टोल्ड यू, इन 11th मैंने अपना जो भी मैं जितना पढ़ सकता था वो किया. एंड इन 12th क्योंकि मेरे पास बोर्ड का भी प्रेशर आने वाला था, सो मैंने कोशिश करी थी कि 12th में मेरे पास जितना कम प्रेशर CLAT की तरफ से उतना बेटर होगा. तो मैंने सिर्फ मॉक्स दिए थे. सो इन 12th आई गेव अराउंड 90 to 100 मॉक्स. और सिर्फ मॉक्स देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे आफ्टर यू गिव इट यू एनालाइज इट, यू वुड वांट टू सी कि वेयर यू वेंट रॉन्ग. सो एग्जैक्टली. सो काफी बार होता है कि आप स्कोर हो के आप छोड़ देते हो उसको, बट यू नीड टू लुक बैक एट इट एंड ऑल दैट. Another thing which is very very important is to do the previous year question papers, because आपको पता होता है कि actual CLAT में क्या पूछा जा रहा है, especially for the sections of legal reasoning and maths, वो काफ़ी similar होती है over the years. तो
तो अगर आप वो करते हैं सारा तो पैटर्न समझ में आपको पैटर्न समझ में आ जाता है. Perfect. So, since हम लोग CLAT की ही बातें कर रहे हैं, I'll let you help yourself as well. Sure. So, CLAT की बातें जब हम लोग कर ही रहे, I heard कि इस CLAT 2018 में there was a lot of technical glitches. तो उस पे मीन्स आपको भी कुछ इफेक्ट हुआ था? So, ये सिर्फ CLAT 2018 नहीं, काफ़ी over the years मतलब CLAT has been surrounded कि इसमें काफ़ी, because it's an online exam, आप कंप्यूटर पे सेंटर पे जाते हो and you do it for 2 hours. So, ये बहुत technical glitches आए थे इस बार, a lot of computers stopped. Even in my case, when I was doing my reasoning का puzzle, when I was in the middle of one question, my computer stopped, and for 5 minutes I was, under that mental pressure that I might lose time and all that, and then my computer was changed. तो यही आप जब आप मॉक्स देते हो, यू जस्ट नॉट ओनली लर्न 200 न्यू क्वेश्चंस, आपको पता होता है कि इन वेरियस सर्कमस्टांसेस आपको कैसे डील करना है. फॉर एग्जांपल जितने ही मॉक्स मैंने घर पे दिए, काफ़ी बार होता था कि लाइट चल गई या कोई आ गया, सो यू नो हाउ टू कैच अप अगेन एंड गो टू द सेम मेंटल स्टेट. तो इसलिए मॉक्स देना यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे भी 5 मिनट लूज हुए थे, मेरा भी कंप्यूटर चेंज हुआ था. सो काफ़ी वो था, बट जिसने अपना कूल रखा, whoever kept his calm was the person who did good. Succeeded. Yeah. Perfect. So, now that obviously we are talking about law, legal things and everything, there's been recently बहुत सारे landmark judgments आए हैं Supreme Court के. So, what आपका क्या कहना है उसमें? Like, do you think कुछ impact आपके ऊपर भी पड़ा था, या how did it affect you? So, इससे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अगर हम देखें तो इट वाज रिलेटेड टू सेक्शन 377 कि LGBTQ कम्युनिटी को लाइक दे नाउ हैव दे राइट टू कंसेंशुअल सेक्स, या आधार हुआ, या अडल्ट्री हुआ, या इवन द सबरीमाला केस. सो इससे वी कैन डिराइव इज कि कॉमन मैन पे लॉ का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. सो द पर्सन हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, नाउ दे हैव बीन गिविंग अ न्यू आइडेंटिटी, अ रिकग्निशन. इवन द आधार जजमेंट इतना हाहुल्ला था कि क्या ये अच्छा है या नहीं है. सो इससे व्हाट वी कैन डिराइव कि लॉ की कितनी पावर होती है कॉमन मैन के जीवन में, इवन इफ अगर आप रियलाइज नहीं करते हो, लेकिन जो भी आप गवर्न हो, जैसे भी स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं, दैट एवरीथिंग इज डिराइव बाय लॉ. सो दैट इज़ वन थिंग जो मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं काफ़ी उससे इंस्पायर्ड था कि कितना लॉ एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज आप ला सकते हो. तो यही है कि जैसे मैंने पहले कहा, मुझे पब्लिक को सर्व करना है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम, दैट इफ आई बिकम अ पॉलिटिशियन, दैट इज़ वन ऑफ माई फैंटेसीज. या so I can bring new laws and all that. So these are some things that I dream about. And even in law school community, हमारी बहुत से, we are just only 400 to 600 people in law school. So जैसे ही कुछ बहुत ही landmark judgment आता, तो we have celebrations and all that. So yeah, so for example the 377, so we have a lot of committees in law school as well. For example, law soc committee and moot court society. तो different aspects आपको law के बारे में भी समझ में आते हैं. ग्रेट. तो बहुत सारी बातें तो अमन हमारी हुई है एग्ज़ाम्स को लेके, बहुत कुछ आपने बताया जो आई थिंक जो भी नए एस्पिरेंट्स है फॉर CLAT और मे बी सम अदर एग्जाम ऑल्सो बहुत टेक अवे ले सकते हैं इससे. Now I want to move on to another section for our episode, and that is a more of a fun section. So this is our rapid fire round, and यहाँ पे basically I'm going to ask you some questions and आपको जल्द से आंसर देना है. Don't think too much. जो भी first आता है thought वो you need to answer. So are you ready for the round? Sure. Perfect. If not a lawyer, then what? Cricketer. Okay. Who's your favorite cricketer? Suresh Raina. Perfect. How would you rate your memory on a scale of 1 to 10? 8. Great. Something that you would tell your 15-year-old self? That the incoming life is very good. Okay. One thing that makes you different from all other? That I am in a lot of different things. Okay. One thing that defines your individuality? Versatility. Great. If given a chance, आप ऐसे कौन सी celebrity के साथ अपना life exchange करना चाहते हैं? No one. You're happy with being Aman Garg? I'm happy. Great. What do you love or hate about being a topper? Well, the thing is that you get to motivate and inspire a lot of things, and the worst part is that people only limit yourself to that AIR one, and do not see you as a person and only that topper. So that's the bad part. Well, that's the whole idea for this. We want to see you as a person. Okay. So a favorite quote from a book or a line from a movie? My favorite quote, it's pertaining to law, as that peace is not the absence of war but the presence of justice everywhere. Great.
Would you rather like to read people's mind or look into the future? कौन सी power आप चाहते हैं? Read people's mind, because future तो it will come as it will come. किसकी mind सबसे पहले आप read करना चाहते हैं? My evaluator, the people who are setting my question papers in the Okay, great. And if you could meet any dead person from history, who Right. would it be? It would be B.R. Ambedkar. Okay, great. If you were to take the CLAT exam right now again, what would your rank be? 7. Why 7? Because काफ़ी दिन पे different होता है कि आपके जो the questions that you excel in come and you know all that. But I know that I'll be in the top 10, so 7. Great. So those were all the questions that I had for you, Aman. And very good performance. आपने ज़्यादा time नहीं लिया. I think this was the quickest rapid fire I've ever done till now. While I decide कि आपके answers कितने अच्छे थे, तब तक आपके लिए एक काम बचा है. ये हमारा actually एक tradition रहा है. हमारे एपिसोड में जो भी टॉपर्स आते हैं वी रिक्वेस्ट देम टू टैग सम अदर टॉपर. तो चाहे आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली में हो, किसी और भी एग्जाम के टॉपर को आप टैग कीजिए सो दैट आवर टीम विल कॉन्टैक्ट देम फॉर द नेक्स्ट. Yeah, so I would like to tag Gaurav Agarwal, who was the IAS topper of 2013. So मेरी family relations में ही है, plus he was from my school. Great. So वो भी मतलब he is in contact, so I like to tag him. Perfect. So Gaurav, as Aman said, आप उनके contact में भी हो and we would also definitely want to meet you. So very soon our team will be contacting you also and we would love to have you on our show. So Aman, another thing that I would request you to do is, since you've shared so much of information and knowledge today, which has been very helpful सभी learners के लिए, now I just want कि आप एक अच्छा सा message हमारे सारे learners को दे दे जो शायद इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो. anyone who is preparing, उनके लिए एक मैसेज. The most important message जो मैं सबको देना चाहूँगा वो है कि जो भी आप गोल आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, आप उसे बहुत जल्दी सेट कर लें एंड आप ये इंश्योर करें कि आप उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है आपके हाथ में जो है वो आप करें एंड यू एंड अप अचीविंग द बेस्ट बिकॉज दैट इज़ द ओनली शॉट यू हैव. एंड जो मैंने अपने फादर से भी सीखी थी वो है कि जो आज जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा कल आने वाले फ्यूचर में लाइफ उतनी आसान होगी, और जो आज कम मेहनत करेगा लाइफ इज़ अ स्ट्रगल आफ्टरवर्ड्स. सो दैट इज़ वन थिंग एंड आप यू शुड ऑलवेज हैव योर गोल इन योर आइज एंड यू शुड वर्क अपॉन दैट. और ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने कुछ एकेडमिकली कोई गोल फिक्स करा है तो आप सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रहें. आप काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन. आप किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं और आपको क्या चीज़ अचीव करनी ही करनी है एंड व्हाट यू आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़. तो ऐसा ही मेरे लिए जैसे पढ़ाई थी, आपके लिए कुछ भी हो सकता है लाइफ में. तो मेक श्योर यू डू ऑल द प्रिपरेशंस फॉर इट एंड यू विल एंड अप अचीविंग द बेस्ट. Great, Aman. That was such an inspiring message. I'm sure जितने लोग भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और even in their day-to-day life, they'll be very motivated hearing that, especially what your dad taught you. बहुत ही अच्छा था. So now, Aman, I have this small gift here from Unacademy for you. Thank you so much. And congratulations once again for all the great things that you're doing. Yeah. And again, a very all the very best for your future. I hope you do amazing things and I hope अभी तक का सफ़र आपका जितना अच्छा गया है इससे आगे भी आपके हमेशा अच्छा ही जाए. And you do very good things for your mum, make your dad proud, be a good brother and very best for everything in life. So great having you here today, Aman. Thank you. It was a lovely day. I mean, the best start I could have to a Sunday morning, and it was great engaging with you and Unacademy team as well. Another thing is that I'll be like contributing to a few courses so that the law aspirants can derive from them. So you can learn from them as well, and it was lovely engaging with you and your team. That's great, Aman. Have a good day. Thank you. You too. Bye bye.